Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pasachadesa Tarine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Charine Nirvisesha Shunyavadi Pasachadesa. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Radha Shiva Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Nanda Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivas. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Haribo. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladev, Jaya Subhadra, Jagannath, Baladev, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jayam Vishnu Pad Ramuksa Brahmadikacharya Astavatar Sata Shishamad Abhay Charan Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Radha Madan Mohan Ki. Shri Shri Krishna Balaram Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Shri Korni Tai Ki. Shri Shri Prahlad Nrsingadev Ki. Srila Prabhupada Ki. Tai Gaur Premanand. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nastabreshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Niksaya Sayasa Lokasya Danyam Swasti Ayanam Mahat. Reading from Srimad Bhagavatam, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Canto 10, Chapter 7, The Killing of the Demon Trinavarta. Text number 3. Atanyad api Krishnasya Tokarcharitam Adbhutam Manusham Lokam Asadya Tajjatim Anurundita Atanyad api Krishnasya Atanyad api Krishnasya Tokar charitam adbhutam Tokar charitam adbhutam Manusham lokam asadya Manusham lokam asadya Tajjatim anurundata Tajjatim anurundata Atanyad api Krishnasya Tokacharitam adbhutam Manusham lokam asadya Tajjatim anurundata. Atanyadapi Krishnasya Tokacharitam adbhutam Manusham lokam asadya Tajjatim anurundata. Atanyadapi Krishnasya Tokacharitam adbhutam Manusham lokam asadya Tajjatim anurundata. Atanyadapi Krishnasya Tokacharitam adbhutam Manusham lokam asadya Tajjatim anurundata. Danyana Krishnasya Tokari Chitam Adbhutam Nusham Lokam Asadya Tajjatim Anurudata. Maharaji. Tanyadapi Krishnasya Tokacharitam Adbhutam Manusham Shokam Asadya
Jatam Anurundatam Atanyad, Ata, also Anyat Api, other pastimes also, Krishnasya, of child Krishna, Toka Acharitam Adbhutam, they are also wonderful childhood pastimes. Manusham, as if playing as a human child. Lokam asadya, appearing on this planet Earth in human society. Tachatim, exactly like a human child. Anurundata, who was imitating. Translation, please describe other pastimes of Krishna, the Supreme Personality, who appeared on this planet Earth, imitating a human child and performing wonderful activities like killing Putana. Please repeat. Please describe other pastimes of Krishna, the Supreme Personality, who appeared on this planet Earth, imitating a human child and performing wonderful activities like killing Putana. Purport by Srila Prabhupada. Maharaj Parikshit requested Sukadev Goswami to narrate other childhood pastimes exhibited by Krishna while playing as a human child. The Supreme Personality of Godhead incarnates at different times in different planets and universes. And according to the nature of those places, he exhibits his unlimited potency. That a child sitting on the lap of his mother was able to kill the gigantic Putana is extremely wonderful for the inhabitants of this planet. But on other planets, the inhabitants are more advanced, and therefore the pastimes the Lord performs there are still more wonderful. Krishna's appearance on this planet, like a human being, makes us more fortunate than the demigods and the higher planets. And therefore Maharaj Parikshit was very much interested in hearing about him. अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें जो मानवीय बालक का अनुकरण करके और पूतनावत जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से विनती की कि वे मानवीय बालक के रूप में कृष्ण द्वारा प्रदर्शित बाल्यकाल की लीलाएं कह सुनाएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न कालों में विभिन्न लोकों तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं और उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वे अपनी असीम शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अपनी माता की गोद में बैठने वाला बालक विशालकाय पूतना का वध कर सकता है। यह इस लोक के वासियों के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला है, किंतु अन्य लोगों के लोग और भी उन्नत हैं, अतः उन लोगों में कृष्ण इनसे भी अधिक अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस लोक में मानव रूप में कृष्ण का प्राकट्य हमें उच्च लोकों के देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली बनाने वाला है। इसीलिए महाराज परीक्षित उनके विषय में सुनने के लिए अधिक उत्सुक थे। So Maharaj Parikshit has come a long way in the hearing of Srimad Bhagavatam. महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनते काफी समय हो चुका है। Now we were beginning Lord Krishna's personal intimate pastimes. अब भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत अंतरंग लीलाओं का वर्णन होने वाला है। But we remember when
Maharaj Parikshit was living the life of a king, running the kingdom. तो जब महाराज परीक्षित एक राजा के रूप में शासन किया करते थे, And after disposing of Kali, और जब वो कली को भगाने का प्रयास कर रहे थे, he went back to his activities of running the kingdom. वे वापस अपना राज्य चलाने चले गए. And then came the fateful day when he was hunting and became extremely thirsty. तो फिर वह दिन आया जिस दिन वह शिकार कर रहे थे और उनको बहुत जोर की प्यास लगी. And he came to the hermitage of Shamika Rishi और फिर वो शमिक ऋषि की कुटिया के पास आए and asked the sage for some water. और ऋषि से उन्होंने थोड़ा पानी की मांग की. For various reasons, the sage did not respond. कई कारणों के कारण जो ऋषि थे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. And the king uncharacteristically और राजा को लगा कि उनका अपमान हुआ है. became disturbed with that sage वे उस ऋषि से थोड़ा क्रोधित हो गए and guarded him with a dead snake. और उन्हें एक मृत सर्प की माला पहना दी. Afterwards, his child Shringi heard of his father's embarrassment. तो जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को अपने पिता के अपमान के बारे में पता चला, And cursed the king. उन्होंने राजा को शापित कर दिया. As Prabhupada mentions, thus ending a happy part of history. तो श्री प्रभुपाद इसको कहते हैं कि यहाँ पे कि इतिहास का एक अच्छा हिस्सा खत्म हुआ. So when Maharaj Parikshit heard that he had been cursed, जब महाराज परीक्षित ने सुना कि उनको शापित कर दिया गया है, Srila Prabhupada mentions that he could have counteracted it. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज परीक्षित भी उस पे कुछ प्रतिवाद कर सकते थे. It wouldn't have been a difficult thing. ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता. But he refused to do so, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा करने से मना कर दिया. considering that the Lord was giving him an opportunity वो यह स्वीकार कर रहे थे कि भगवान उन्हें एक अवसर दे रहे हैं to leave this material world, जिससे वह इस भौतिक जगत को छोड़ सकें. and that the times were not favorable. और वह समय उनके लिए अनुकूल नहीं था. He could recognize that Kali Yuga was coming in full. वह समझ सकते थे कि कलयुग आ रहा है. So he was not at all interested in sticking around. तो यह बहुत ही ज्यादा रोचक नहीं है कि हम किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त रहें. And his deciding to fast until death और उन्होंने मृत्यु तक पूरा भूखा उपवास रहना स्वीकार किया. was an occasion where thousands and thousands of saints came यह वह अवसर था जब हजारों हजारों ऋषि आए थे from all over the universe पूरे ब्रह्मांड से to sit and fast, to accompany him, to witness his giving up this life. तो वो भी यहाँ पर आए थे क्योंकि वो भी पूरा उपवास करने को तैयार थे और वह इस बात का साक्षी बनना चाहते थे कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से अपना देहावसान करते हैं. So it appears that Kali was successful ऐसा लगता है कि कलयुग सफल हुआ in ridding the world of Maharaj Parikshit. कि महाराज परीक्षित जो हैं अपना शासन छोड़ दिए. But actually Maharaj Parikshit was only interested लेकिन महाराज परीक्षित केवल इसमें रुचि रखते थे in hearing the topics of the Lord. कि वह भगवान की कथा के श्रवण में रुचि रखते थे. It was mentioned that even the sages who were sitting in Naimisharanya ऐसा वर्णन हुआ है कि जो ऋषि नैमिषारण्य में बैठे थे their attempts at creating the fire sacrifice कि वे सब वहां पे कुछ यज्ञ हवन करने का प्रयास कर रहे थे had only succeeded in bringing volumes of black smoke. और वे ज्यादा कुछ करने में सफल नहीं हुए, सिर्फ बहुत सारा धुआं ही वहां से हवन से किए. So they recognized upon the appearance of Sukadeva Goswami लेकिन जब वहां पे शुकदेव गोस्वामी आए तब वो समझे that this was a
special arrangement कि यह एक विशेष व्यवस्था की गई है for the recitation of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम के कथा कीर्तन के लिए. So I was thinking here again, Maharaj Parikshit has heard the first of Krishna's childhood pastimes. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं. And of course there are many more. और उससे भी कई अधिक लीलाओं को सुनना चाहते हैं. But I was thinking, what is the difference लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि क्या अंतर है between the hearing सुनने में of Maharaj Parikshit महाराज परीक्षित के सुनने में and the hearing of myself? और हमारे सुनने में. What is the difference between the speaking of Sukadeva Goswami सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन में क्या अंतर है and the speaking of ourselves? और जब हम उस पे कथा करते हैं उसमें It's just it was recognized as the most important activity. उस समय इसको सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में समझा गया था. In modern civilization, there are so many sports figures और आधुनिक सभ्यता में बहुत सारे and sports events. बहुत सारे खेल के हमारे सामने आंकड़े आते हैं और उसका The उत्सव World होता है. Cup. वर्ल्ड कप. But at this time, all the sages of the world recognized a extra special event that was happening. लेकिन उस समय जितने भी ऋषि थे उन्होंने सोचा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है. The emperor of the world कि जो इस पूरे दुनिया के सम्राट हैं was renouncing his kingdom वह अपने राज्य से त्यागपत्र दे रहे हैं and going to surrender his life on the bank of the Ganga. और गंगा के किनारे अपने जीवन को भगवान को समर्पित करने जा रहे हैं. That was big news. तो उस समय यह खबर चारों ओर फैल गई थी. So what is the difference between Maharaj Parikshit and ourselves? हमारे और परीक्षित महाराज में क्या अंतर है? Prabhupada would often say Maharaj Parikshit knew that he had 7 days. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज परीक्षित को पता था कि उनके पास सिर्फ 7 दिन हैं. We do not even know if we have 7. हमें यह भी नहीं पता कि हमारे पास 7 दिन है कि नहीं. And many of these days have already passed. We're already hearing the 10th canto. और अभी तो बहुत सारे दिन बीत भी गए हैं और हम 10वां स्कंद पे श्रवण कर रहे हैं. So it's maybe 2 or 3 days left. तो अभी हो सकता है कि हमारे पास 2-3 दिन ही बचे हों. But what is happening is Maharaj Parikshit's increased intensity तो इसमें परीक्षित महाराज की तीव्रता बढ़ती जा रही है सुनने के लिए. to hear about Krishna भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए. is developing such a taste for hearing Krishna's wonderful activities and pastimes. वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने में बहुत ही उनमें रुचि विकसित होती जा रही है. This was the purpose of the appearance of the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य का यही उद्देश्य था. The Bhagavatam is there to attract us to the pastimes of the Lord. भागवतम हमको भगवान कृष्ण के लीलाओं से आकर्षित करना चाहती है. Krishna Sudama Bhagate Dharma Jnana Dabisaha Kalona Stadrisham Esha Puru Narko Dunodita. That this Bhagavad Purana is as brilliant as the sun. Okay. यह भागवत पुराण सूर्य के समान ही प्रकाशमान है. And it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode. और जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो ठीक उसके बाद यह पुराण प्रकट हुआ. Accompanied by religion, knowledge, etc. और यह अपने साथ धर्म ज्ञान के साथ प्रकट हुआ है. Those who are suffering from the dense darkness of ignorance of this age of Kali, जो अज्ञान के अंधकार में हैं उससे पीड़ा पा रहे हैं, shall get light from this Purana. उनको इस पुराण से प्रकाश ज्ञान मिलेगा. So we have to qualify ourselves as well in order to hear properly. तो हमें अपने अंदर योग्यता विकसित करने की हम ठीक प्रकार से श्रवण कर सकें. And appreciate the efforts that have happened in order for us to hear these wonderful words.
और हम उस अवसर की सराहना करें कि हमको यह श्रवण करने का अवसर मिला है। If Srila Prabhupada had not come, यदि श्रील प्रभुपाद नहीं आते the Bhagavatam would have been there, तो श्रीमद् भागवतम भी नहीं होता, but nothing like in its presence as it is today. तो जिस प्रकार से अभी है उस प्रकार से तो बिल्कुल भी नहीं होता। Certainly myself I would have never heard. निश्चित रूप से मैं तो इसके बारे में कभी नहीं सुना होता। And chances are even yourselves, being born in India. और आप लोग कितने भाग्यशाली कि आप लोग यहाँ भारत में जन्म लिए हैं। It wouldn't have been such a great topic. तो ये बात हमको इसकी महत्ता में नहीं पता होती। But now because of Maharaj Parikshit's endeavor, लेकिन महाराज परीक्षित के प्रयास से and the broadcasting of that by the great saints, और जो महान ऋषियों ने इसको पूरी दुनिया में प्रतिपादित किया है, our great acharyas, हमारे महान आचार्य, and especially Srila Prabhupada, विशेषकर श्रील प्रभुपाद, we have the opportunity to hear this wonderful conversation. कि हमें यह अवसर मिल गया है कि हम यह सुंदर अद्भुत संवाद को सुन सकते हैं। Srila Prabhupada would often make reference to Bhagavat Saptaha, श्रील प्रभुपाद अक्सर भागवत सप्ताह के बारे में भी कहा करते थे, and often showed his displeasure. और इसके प्रति वह अपना अनमनस्कता प्रदर्शित किया करते थे। Because the current version has nothing to do with the real verses of the Bhagavatam. क्योंकि उसमें जो कथाएं होती हैं उनको श्रीमद् भागवतम का जो मूल उद्देश्य है, मूल कथा से कोई लेना देना नहीं होता। He mentioned that the so-called reciters go directly to Krishna's intimate pastimes with the gopis. वे कहते हैं कि जो तथाकथित कथावाचक हैं वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का वर्णन करने चले जाते हैं गोपियों के साथ। And neither themselves nor their hearers ना कि वे स्वयं ना कि खुद उनके श्रोता have any way of understanding the true nature of that subject matter. दोनों उस विषय वस्तु को उसकी वास्तविक तथ्य को नहीं समझ पाते। Srila Prabhupada was in Chennai श्री प्रभुपाद चेन्नई में थे many years ago, and he was being hosted at a pandal by one of the high court judges. और वहाँ पे एक पैंडाल प्रोग्राम चला था और श्री प्रभुपाद एक हाई कोर्ट न्यायाधीश जज के घर में रुके थे। And there were different incidents that happened at that time. वहाँ पे कई सारी घटनाएं हो रही थी उस समय। There was another couple that hosted Prabhupada, एक और दंपति था जिसने श्री प्रभुपाद का स्वागत किया था, and they requested Prabhupada to recite to them और उन्होंने श्री प्रभुपाद से निवेदन किया कि वे उनके घर भी रुकें, the intimate pastimes of Krishna with the gopis. उनको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के साथ क्या अंतरंग लीलाएं हैं। Srila Prabhupada said that subject matter is not for ordinary people. श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि वो जो तथ्य है, उनकी जो कथा है वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है। But the couple kept pursuing. लेकिन वो दंपति बार बार अपना निवेदन करते जा रहे थे। They were trying to explain that no, Swamiji, we are very keen. वे ऐसा बोले थे कि स्वामी जी हम बहुत ही उत्सुक हैं सुनने के लिए, We would very much like to hear. हम बहुत सुनना चाहते हैं, बहुत इच्छा है। And Prabhupada again repeated that it's not subject matter for the general mass of people. श्री प्रभुपाद ने कहा कि यह साधारण जन समुदाय के लिए नहीं है। And finally they said, Swamiji, please. और अंत में उन्होंने कहा कि स्वामी जी प्लीज। And therefore Prabhupada replied, और फिर श्री प्रभुपाद ने कहा, he said, well, you may be sufficient people to hear, हाँ हो सकता है कि आप में योग्यता है कि आप उसे सुन सकते हैं, but I am not a sufficient person to speak it. लेकिन मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उस कथा को बता सकूं। So it's very elevated personalities that have brought the Srimad Bhagavatam to us. तो बहुत ही उन्नत व्यक्तित्व हैं जो हमारे पास श्रीमद् भागवतम को लेकर आए हैं। And we have to continuously renew our enthusiasm to hear. और हमें अपने अंदर बार बार अपने उत्साह को, उमंग को पुनर्जागृत करते रहना है श्रीमद् भागवतम अध्ययन के लिए। And we have to inquire about the real purpose
of hearing this important subject matter. और इस विषय वस्तु को श्रवण करने का जो महत्ता है उसको उसके बारे में भी हमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए. We have just finished with Putana. अभी हमने पूतना वध का लीला पूरा किया. Now we are coming up to the Shakatasura. अभी हम शकटासुर के लीला पर आ रहे हैं. And then the Trinavarta. उसके बाद तृणावर्त आएगा. And these personalities are all horrible demons. ये सब बहुत ही भयानक राक्षस हैं. But ultimately they're all unfortunate persons. लेकिन ये सब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं. Because they've missed the opportunity of leading a good and pious life. क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जीवन बिताने के शुभ अवसर को खो दिया. And engaging in the activities of devotion to the Lord. और उन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा से वंचित रहे जिंदगी भर. But still Krishna is kind. लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं. Even though they are technically lost causes. तकनीकी रूप से यद्यपि वे पूरी तरीके से भटक गए हैं, the Lord is still kind enough to chastise them. फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वे उनको सजा देते हैं. And thereby give them His mercy. और इस प्रकार से उनको सजा के रूप में अपनी कृपा देते हैं. So as we're reading in this purport, that Maharaj Parikshit is requesting Sukadev to narrate more of Krishna's childhood pastimes. तो हम यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ रहे हैं कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से विनती कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाली लीलाओं का और अधिक वर्णन करें. And this whole month we're absorbed in this pastime of Krishna as the naughty child Damodar. और इस पूरे महीने हम भगवान श्री कृष्ण का एक शरारती रूप दामोदर के रूप में उनकी पूजा करते हैं. And we were mentioned the other day that the Gopal Champu gives a little further understanding. कुछ दिन पहले हम गोपाल चंपू के बारे में बता रहे थे कि उसमें कैसे लीलाओं को विस्तारित किया गया है. Of what happened after Maharaj Nanda came home. कि उस समय क्या हुआ जब महाराज नंद वापस घर आए थे मथुरा से. And found his son tied up like an animal. और उन्होंने देखा कि जो मेरा खुद का पुत्र है उसको एक जानवर की तरह बांध दिया गया है. And it's one would think a parent, what to say the king of the village. तो एक सामान्य पिता अपने पुत्र के बारे में सोचता है और वो तो एक राजा के पुत्र के रूप में उनको बांध दिया गया था. Would be quite upset to see his son tied up like a bandit. तो उन्होंने अपने पुत्र को एक बंधक के रूप में पाकर बहुत ही दुखी हुए थे. So he asked Krishna, who's done this? तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुमको किसने बांधा. And Krishna plays his part very well. और कृष्ण भगवान अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं. Mata has done this. कि माता ने बांध दिया है. So, as parents, sometimes we recognize many times how our children are smarter than we are. तो माता पिता के रूप में हम अक्सर यह समझ सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे कई ज़्यादा स्मार्ट हैं. They become expert in playing one parent off the other. वे माता पिता में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से खेला जाए समझते हैं. But Krishna's ultimate purpose in everything. लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो चरम उद्देश्य है सारे कार्यों में is to increase the love of his servants for his lotus feet. कि वे चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनका भगवान के चरण कमलों में और अधिक आसक्ति बढ़ जाए. In that particular case, Maharaj Nanda even offered to hit. तो उस इस लीला में महाराज कहते हैं कि तो क्या मुझे माता यशोदा को पिटाई करनी चाहिए. Shall I beat her? क्या मुझे उनकी पिटाई करनी चाहिए. And Krishna says no. भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं. And then he goes and embraces his mother. और फिर जाते अपनी माता का आलिंगन कर लेते हैं. And there's a very wonderful ending. और ये इस प्रकार से बहुत ही अच्छे प्रकार से लीला समाप्त होती है. So all of these activities are also part of our own spiritual life. तो ये सारी जो लीला है वो हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है. Because
everything that's happening in this world क्योंकि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है is working under the control of the Supreme Lord. वो भगवान के नियंत्रण में सब हो रहा है. And everything that is happening in our lives और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है also has the touch of the Supreme Lord. उसमें भी भगवान का स्पर्श है. Just we do not see. बस लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. So as we read these wonderful pastimes of Krishna's, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की इन अद्भुत लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं we can see how everyone is amazed. तो हम देखते हैं कि कैसे सब लोग पूरा आश्चर्यचकित रहते हैं. Everyone is pleased and satisfied सब लोग संतुष्ट और खुश रहते हैं by Krishna's wonderful activities, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण, his characteristics and qualities, उनके चरित्र, उनके गुण के कारण, his personality of Godhead. क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं. So Maharaj Parikshit, even though he's dying soon, तो महाराज परीक्षित जो कि बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, he's not eating or drinking anything. वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, He's not sleeping. वो सो भी नहीं रहे हैं, He's still enjoying वे अभी भी इसमें रस आनंद ले रहे हैं. the highest type of ecstasy. वो अपने चरम परम आनंद में हैं And only simply wants to hear more. और वो सिर्फ क्या चाहते हैं, और अधिक श्रवण करना चाहते हैं. So we can pray to Maharaj Parikshit तो हम परीक्षित महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं to please give us that desire कि वे हमें भी यह इच्छा प्रदान करें to only want to hear about Krishna's pastime, कि हम भी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही श्रवण करना चाहें. to want to hear more and more हम उनके बारे में और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहें, about this naughty child's wonderful activities. उस शरारती बालक की अद्भुत लीलाओं के बारे में. So this particular purport is important. यह जो तात्पर्य है यह काफी महत्वपूर्ण है. It's following this gigantic demon being killed, क्योंकि उसमें अभी तक विशालकाय जो राक्षसी उसका वध हो चुका है, and some of the upcoming pastimes और कुछ अन्य लीलाएं आने वाली हैं are also very wonderful. जो कि वो जो अद्भुत लीलाएं हैं. But the underlying principle लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है is that Krishna is playing the part of a child कि भगवान श्री कृष्ण बाल सुलभ लीलाएं कर रहे हैं and performing wonderful activities. और बहुत ही सुंदर अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं. So Maharaj Parikshit had to put up with so much difficulty. महाराज परीक्षित के सामने बहुत सारी समस्याएं थी. Being cursed, उनको शापित किया गया था, giving up his attachments for his family, अपने परिवार से उनको आसक्ति छोड़नी पड़ी, for his responsibilities. अपनी जिम्मेदारियों को उन्हें छोड़ना पड़ा. Maharaj was a great king, महाराज परीक्षित बहुत बड़े राजा थे and he felt responsible for all of his inhabitants like his own children. और अपने पूरे प्रजा और बच्चों का उनके पे उत्तरदायित्व था. He had his children, his family. उनका परिवार, बच्चे सब था. He had his animals, उनके पास उनके जानवर भी थे, his horses and chariots. उनके रथ घोड़े सब थे. And he had his enemies as well. उनके पास उनके शत्रु भी थे. And he needed to protect his citizens against them. और उनका दायित्व था कि वे अपने जो नागरिक हैं उनकी रक्षा अपने शत्रुओं से करें. But he decided to give it all up लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि वे इन सबको छोड़ देंगे in order to achieve the greatest benediction. क्योंकि जो परम सिद्धि है वे उसको लाभ करना चाहते थे. So it's the underlying theme of the entire Bhagavatam. तो पूरे श्रीमद् भागवतम का यह मूल सिद्धांत है Is that ultimately we have to give everything up. कि हम वस्तुतः हम लोग को वास्तव में सब कुछ छोड़ ही देना है. Surrender to the lotus feet of the Lord और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेना है and simply try to engage in whatever service we can. और जो भी सेवाओं में हम नियोजित हो सकते हैं उनमें हमें अपने आप को नियोजित करना है For his pleasure. उनकी प्रसन्नता के लिए.
So, so I didn't have a great deal to say today. I don't know if there's anyone has any questions. प्रश्न है पूछ सकते हैं. We didn't really get into the pastimes yet. The chapter has Krishna kills a few demons, but the preliminary is all here still. किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Question. Okay, that's fine. Then we'll finish here. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Thai Gaur. His Grace Medhavi Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai.